Hello and welcome. This is video number 2 for chapter e-commerce. Next term is e-tailing. E-tailing means electronic retailing. Okay, so जो भी retail shops अगर अपना business online करते हैं with the help of internet, it is known as e-tailing. Okay, so e-tailing is the abbreviation of electronic retailing. It is the sale of goods and services through the internet. E-tailing involves business to business और business to customer transaction. Means एक business दूसरे business को भी goods या services provide कर सकता है या एक business अपने customer को भी goods and service provide कर सकता है. Business to business means Amazon अगर कुछ goods या service Flipkart को sell कर रहा है वैसा कुछ clear. And business to customer मतलब Amazon या Flipkart हम लोग को या मुझे personally कोई goods या services sell कर रहा है. Okay. The pricing in e-tailing shop is generally lower than that of the traditional shop. Traditional shops मतलब जो हमारे nearby जो हमारे shops होते हैं clear, जो retailers होते हैं okay clear, उनसे e-tailing में या electronic commerce में ठीक है prices are always lower. ठीक है, अगर आपने भी कभी कुछ purchase किया होगा तो आपने भी compare किया होगा that on e-commerce websites price हमेशा कम रहता है than by the retailer अगर आप उसको compare करो. ठीक है clear. The customer also gets benefit from the fact that he or she does not need to physically visit the shop for making the purchase. Yes, आप अपने घर पे बैठे बैठे ठीक है from anywhere at any time and at any place आप कोई भी transaction या कोई भी order प्लेस कर सकते हो. ठीक है, उसके लिए आपको फिजिकली पर्सनली विजिट करना नहीं पड़ता शॉप के लिए. ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल रिटेल शॉप्स में आपको पर्सनली विजिट करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू चूज और सिलेक्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर विश. ठीक है, और वहां पे आपको जाके ही वो ट्रांजेक्शन करना पड़ता है. वेयरएज ई टेलिंग में आपको एक एडवांटेज है, आपके पास एक कन्वीनियंस है. ठीक है, कि आप अपने घर पे बैठ के भी कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल आर eBay.com, Amazon.com, Flipkart.com and many more. Next is steps for e-tailing. Okay, you can first visit the website. Okay, कोई भी e-tailer है या e-commerce website है आप उसको visit कर सकते हो. Okay, second point is choice of product. This is an advantage to the customer. Okay, there is you can say a wide variety of product, wide range of products जिसमें से आप अपने हिसाब से according to your own wish आप product choose कर सकते हो. ठीक है, next there is an option for online payment. After you have selected your product, okay, you can make payment online or either you can select option for COD, that is cash on delivery. Okay, you can make online payment through e-wallets or through net banking or through debit or credit card also. Once you have selected and placed an order for a particular product, now the time comes for the delivery of the product. Okay, so as soon as possible e-tailer will try to deliver the product to you. ठीक है, बहुत बार वो लोग एक पूरा का पूरा अपना एक सिस्टम रखते हैं, अपने खुद के डिलीवरी पार्टनर्स या एजेंट्स हायर करते हैं जो आप तक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज कस्टमर फीडबैक. कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से वेरी यूनिक फीचर ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट. ओके, क्यों ऐसा? बिकॉज कस्टमर फीडबैक के थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट अपने कस्टमर्स के सारे प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं, जैसे कि रॉन्ग डिलीवरी या लेट डिलीवरी या डैमेज प्रोडक्ट्स या और भी कोई भी XYZ रीजन हो सकता है. ठीक है, जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गया हो. ठीक है क्लियर. तो उसको ई कॉमर्स वेबसाइट को अगर ये सब चीज जानना है, ठीक है, इफ दे वांट टू नो कि क्यों उनका कस्टमर या क्यों उनका एक पर्टिकुलर क्लाइंट डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, तो कस्टमर फीडबैक उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है क्लियर. सो दिस इज अ यूनिक फीचर विच यू विल ओनली एंड ओनली गेट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ओके, सो दिस आर स्टेप्स फॉर ई टेलिंग. Next is advantages of e-tailing to both you can say customer as well as to the seller. Okay, seller को सबसे first and important आप बोल सकते हो advantage है increase in sales. Increase in sales इसके वजह से because seller कितना भी small basis पे अपना काम कर रहा हो, clear, उसका जो scope होता है, ठीक है, जो उसका horizon हो जाता है, ठीक है clear, वो बहुत wide area को assess कर सकता है. ठीक है, और उसके वजह से उसका sales daily आप बोल सकते हो increase हो सकता है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे. आप बोल सकते हो यस ई टेलिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करना, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल रिटेल स्टोर सेटअप करना इज वेरी इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू स्टार्ट योर बिजनेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द यू कैन से एज वेल एज सेलर एज वेल एज बायर. ओके क्लियर. सेलर के लिए इसके लिए कन्वीनियंट है बिकॉज उसको कोई आप बोल सकते हो एक रिटेल शॉप को मैनेज करने जितना मेहनत नहीं करना पड़ता. क्लियर.
whereas customer के लिए he or she can order at any particular you can say place, ठीक है, उनको physically visit नहीं करना पड़ता, ठीक है, store तक. And last point is round the clock functioning of the store. Okay, so round the clock functioning होने के वजह से customer or a client can order at any particular point of time, ठीक है, 24 hours a day, 7 days a week and 365 days in a year. Next is e-advertising. E-advertising is also known as online advertising. Online advertising means आप कोई भी goods या services का advertisement online करते हो with the help of internet. Okay, so e-advertising is a mechanism of promoting products or services online. It is the more cost effective when compared to traditional forms of advertising. Traditional forms मतलब newspapers या magazines या television, radio, ये सब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज है, ठीक है, या इवन पेम्पलेट्स या होर्डिंग्स आप लगा देते हो, क्लियर. सो दिस आर ऑल ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. इन सब का कॉस्ट इज वेरी हाई इफ यू कंपेयर देम विद ई एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज ई एडवर्टाइजिंग ऑल्सो अनेबल्स यू टू टारगेट टू द स्पेसिफिक कस्टमर्स, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स और थ्रू डिफरेंट वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल्स. ओके, क्लियर. आप स्पेसिफिक कस्टमर के साथ साथ अब इन जनरल कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हो. लाइक इफ यू आर एडवर्टाइजिंग कुछ पर्टिकुलर का प्रोडक्ट ऑन से फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है, तो उसको कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट दिख सकता है या ऑल ओवर द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट हो सकता है, क्लियर. तो वो आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर भी हो सकता है. प्रोस्पेक्ट कस्टमर मतलब ऐसा कोई पर्सन जो फिलहाल आपका कस्टमर है नहीं, but can be your customer, okay, and can be your current customer also. Okay, so specific customer ke towards target advertisement is also possible with the help of e-advertising. Okay, some examples of e-advertising are wallpaper advertising. It changes the background of the website to the chosen promotion. मीन्स एज सुन एज आप कहीं पे भी क्लिक कर दे दो, ठीक है, ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, ऑटोमेटिकली दैट वेबसाइट विल टेक यू टू सम अनदर वेबसाइट और विल टेक यू टू सम अनदर लिंक और अनदर पेज, ओके, जहां पे आपने जो चूज किया है उसके बारे में, उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन दिखाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज पॉपअप एडवर्टाइजिंग. ओके, सो पॉपअप एडवर्टाइजिंग इज जनरली आप कोई भी नए वेबसाइट पे जाते हो, क्लियर, तो वहां पे कुछ पॉपअप्स आ जाते हैं, ठीक है, डिस्क्राइबिंग या एडवर्टाइजिंग अबाउट सर्टेन प्रोडक्ट्स, क्लियर. सो दैट कैन बी टर्म्ड एज पॉपअप एडवर्टाइजिंग. ओके, so it pops up a new screen upon clicking a certain link on the website that it advertises the product. Next is floating advertising. The floating e-advertising is a kind of floating banner on the website which tempts, मतलब attract करता है the visitor to click on it. It can be a banner or you can say a pop-up और different kinds of moving words या strips, ठीक है, क्लियर, जो आपको अट्रैक्ट करेगा कि आप उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं आप उसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ो. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ई एडवर्टाइजिंग. फर्स्ट पॉइंट इज लो कॉस्ट. As compared to print and TV media, if you compare cost with online advertising, it is really very low. Okay, it is, you can say, a cost effective way of advertising. Okay, print media हो गया, TV media हो गया, clear. वहाँ पे the cost of advertising is very high and it is very expensive. Okay, so hence you can say online advertising is cost effective. Also, all kinds of firms, that is large scale firms, middle scale firms या middle size firms and small scale firms can also do online advertising or e-advertising. This because this is the most cost effective and affordable form of advertising. Next point is wide reach of your e-advertisement. Means कि जो कोई all over the world internet use कर रहा है, ठीक है, आपका e-advertisement of your product or service can be displayed to that particular person. नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंट रिजल्ट. अगर आपका एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव है, ठीक है, क्लियर, सो कस्टमर कैन इमीडिएटली क्लिक ऑन द पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एंड कैन ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट दैट इज गुड्स और सर्विस इमीडिएटली. सो दिस विल रिजल्ट इन एन इंस्टेंट इफेक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग योर ई एडवर्टीजमेंट. दैट मीन्स कि आप अपना ई एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल है या नहीं वो आप मॉनिटर भी कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल वे कि आपका एडवर्टीजमेंट कितने डिफरेंट वेबसाइट्स पे लॉन्च हुआ था
एंड उसके वजह से कितने डिफरेंट नए कस्टमर्स या नए प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स आपके वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. बाय दिस वे यू कैन मॉनिटर योर सक्सेस ऑफ ई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन. Next point is constant exposure. Constant exposure to your advertising means लोग आपके advertisements कभी भी देख सकते हैं 24 hours and in fact all over the year आपके advertisements हमेशा displayed रहते हैं clear. तो जब भी लोग internet on करते हैं clear, they can definitely see your advertisement. Next point is geo targeting. Geo targeting means you can target your advertisement to a particular section of the society, that is according to the age, gender, religion or particular region. Okay, so you can target your product to particular section of the society whom you want to sell your product. Okay, so these are some advantages of e-advertising. Next important term is e-marketing. Electronic marketing or also e-marketing is also known as internet marketing, web marketing and digital marketing or online marketing. It is a process of marketing a product or services using internet, emails and wireless media. ठीक है, so एक ऐसा particular process जिसमें आप अपने product या services का marketing करते हो, ठीक है, by using either internet or email or wireless media. Following are the types of e-marketing. First is video marketing. In this kind of e-marketing, a video will be shared describing the usage and benefits of the product or service. मतलब कोई भी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे for a particular product or service और उसको शेयर कर देंगे on the internet. It is often similar to the television commercial. TV advertisements जो होती है बस वैसा ही होता है, but in this particular type of video marketing, video will be a very short video, ठीक है, describing all important features and you can say specifications of product or service. Next is email marketing. Direct emails are being sent to the potential customers. Potential customers वो जो particular product में interested हो सकते हैं. Each and every person को ये particular type of email send करके कोई मतलब नहीं है. Describing the benefits of product or service. ठीक है, तो उसी particular person को ये email receive होगा जो वो particular product service purchase कर सकता है. Next point is blogging. Publishing blogs about similar products is also a very smart way of marketing some business. Okay, what are blogs? A website on which someone writes about their personal opinion or personal experience from the product or service. Okay, in this way जो भी पॉजिटिव कस्टमर्स होते हैं या पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं कस्टमर के, वो कंपनी अपने दूसरे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स तक बता सकता है कि उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कितने लोग सेटिस्फाइड है. क्लियर. Next is social media marketing. This form of marketing means promoting company's product and services on social media handles like Facebook, Twitter and Instagram. ठीक है, Twitter पे तो advertisements are very less, but it is mostly on Instagram nowadays and earlier it used to be on Facebook also. It is a cost-effective way because these platforms allow business to create profile for free and free of cost, almost free of cost में आपका advertisements हो सकता है. Okay, so these are some different kinds of e-marketing, that is video marketing, email marketing, blogging and social media marketing. Next is advantages of e-marketing. First point is global reach. Global reach means a company can make customers all over the world. ठीक है, वो पूरे दुनिया में कहीं से भी अपने customers बना सकते हैं. Next, round the clock. Round the clock functioning means it functions almost 24 hours. ठीक है, पूरे दिन चालू होता है. Clear. ये marketing कभी भी बंद नहीं होता. Next, latest information. A business can update about new products or any other new service to their customer through SMS or through email. Okay. Next point is cost saving. Okay. As you know, on many social media platforms such as Facebook, Instagram, you can share a particular advertisement almost free of cost. Okay. तो company के लिए उस particular advertisement या उस particular marketing activity का कोई भी effective cost नहीं होता है. Okay. Next point is instant reach. Instant reach means as soon as the e-commerce websites launch a particular sale, जब भी वो अपना sale start करते हैं, clear, customer as soon as possible वहां से कोई भी product या service buy कर सकते हैं, that too at very effective and low prices. Next point is direct approach. With the help of e-marketing,
company or e-commerce website can directly approach to its target customers, or you can say that particular customer जो उनके product या services में interested होगा. Okay, so these are some advantages of e-marketing. The next part of this chapter will be uploaded in video number 3. Thank you.